Today we will see some of the uh, you know uh, topics from the family from the last lecture, and then we will quickly move uh, to the Revit project window, and we will start a project from the scratch. Okay, we will model a building, right? Four five floors building, 4 5 story building. That is a control room of a powerhouse building, right? So we will start modeling of that building, and we will try to cover each of the tools while modeling that building, right? So I am just sharing two CAD files with you guys in the group. Please download those CAD files and then try to open those CAD files in your PC. Is that fine? Hello. Yes, sir. I'm sharing two CAD files. Okay, download those CAD files. Okay. Now you are sharing. Hmm. Yes, Eldrin, have you downloaded the files? Yes, sir. Okay, now let me start sharing the uh, what I would say presentation. But before that, let me open Revit as well. Open your Revit as well, okay? Can you see the screen? PPT is visible to you all? Oh, sir. No? Now it is visible. Okay, fine. So we have covered all those topics, right? We have covered family, fundamental concepts of family, right? Then we saw types of families, system families, loadable families, in-place families, hosted families, nested families, annotation families, parametric families, right? And this was the quiz which was given to you, and I hope you have completed this. We have just discussed this quiz as well. Now I'll take you through quickly to the Revit. Okay, let's head to the Revit, and I'll show you some of the important features of uh, Revit family. Okay, wherein we can model some complex shapes by using the tools. Okay, so Revit window is ready, and you can see my Revit window, right? Yes or no? Quickly, yes or no? Hello, please reply if the window is visible. Yes, No, yes, because visible, visible. if you are replying quickly, na, that means yes, you are with me. You are not sleeping. Okay, families. I am opening a new family from here. See, family. I'm going to family, and then I'll go to new. Okay. Okay. The moment I'll go to new, it will ask me, it will take me to the to this folder. By default it will take me to this folder, family templates. So you need to choose English family, English imperial or English simply. Just go to the English. Don't choose any of the one like Chinese, Czech or German, Italian. These are the country based families.
We are working with the English families, like we are following the USA, the UK. Okay, so that is why we are just following English families. Just click on that, right? And here you have different templates. Okay, let's say you have to model any baluster. Baluster is like, vertical member of the staircase steps. Baluster post. Sorry, I have just opened this baluster post by mistake. I need to go back again. Okay. Uh, okay, I'm opening again. New family. So these are the family templates, like, column and then curtain panel, whatever type of shape you want to make, you have different already available templates. Okay. Metric door. Let's say you want to develop some metric door, you have to develop a family of a door, you have already template of that door. Okay. So basically क्या होता है कि जैसे जिस तरीके की शेप आपको बनानी है वो पर्टिकुलर टेम्पलेट is very helpful for you guys to start with your family. Okay. अगर डोर बनाना है तो डोर में कितने रेफरेंस प्लेन चाहिए होंगे वो ऑलरेडी आपको बना के टेम्पलेट में दिए हुए हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर वर्क एट दिस मोमेंट. हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें क्या शेप बनानी है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. तो इन दैट केस, फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि मुझे कौन सी शेप बनानी है, कौन सा मैं टेम्पलेट चूज करूँ, या फिर you see, if you will find that there is no template which is matching as per your purpose. आपके हिसाब से इसमें कोई फिट नहीं बैठ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे काम के नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज गो विद द जेनरिक मैट्रिक मॉडल. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, आपको आइडिया नहीं है अभी शेप बनाने का, आपके हिसाब से द टेम्पलेट इज नॉट अवेलेबल, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू मैट्रिक जेनरिक. You can start with this. This is a generic model. Open this. Right. Now try to understand very important things here. See, this is the family template. Now you see you have this limited ribbon over here. Create, insert, annotate. I'm sorry. Manage, add-ins, modify. These are the limited options you have over here, right? This is the reference level. Reference level means you might have seen the project Revit model window. वहां पर आपके पास फ्लोर प्लान्स होते थे, सेक्शंस होते थे, लेवल्स होते थे, एलिवेशंस होते थे. ठीक है. बट unlike that we do not have those kind of levels and all. We have just reference level. Reference level is as good as your plan view. So this is your reference level, right? This is your plan view, top view. This is your left view. Okay. This is your front view. This is your by default 3D view. Okay. So there is nothing. So nothing is visible here because we haven't modeled anything here, right? Back, front, left, right. These are the four elevation views. Then we have ceiling view, reference level view. Now, these are known as reference planes. Okay. By default, these are given to us just to start our modeling work here for a reference point. You can consider it as like 0, 0. Okay. Just for the reference, the name of these planes are reference planes. Okay. Left maybe we have given with this reference planes. This is level 0. Just to start your modeling work. If you want to delete them, you can't delete them. But if you want to some more reference planes, you can always add. How? Go to create, right? When you go to create, you go to the plane, reference plane datum. Okay. And let's say you want to add some reference planes, you can add. Reference plane का फायदा क्या है? Why the reference plane have been given? The reason is that reference planes एक काइंड ऑफ स्केलेटन है हमारे किसी स्ट्रक्चर का. फॉर एग्जांपल मुझे कोई टीडीएस कोई एक कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है, सो आई विल क्रिएट रेफरेंस प्लेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके हेल्प से मेरे लिए वो फैमिलीज को बनाना इजी हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, let us take an example. I just want to make a footing slab.
let's say footing slab, extrusion of footing slab. So and that should be rectangular. Okay, वो rectangular होना चाहिए. तो मैंने एक एग्जांपल लिया रेफरेंस प्लेन की हेल्प से. ठीक है, तो आई विल गो टू क्रिएट एंड देन आई विल गो टू एक्सट्रूजन. राइट, जैसे ही मैंने एक्सट्रूजन टूल चूज किया, these draw options will be enabled for me. Right, I'll go to quickly rectangle and then select the corners of these reference planes and then press OK. So my this thing would be ready. Okay, this slab or plane is ready, 3D shape is ready. This is a family. I'm repeating again, this is my left view. Okay, I'm deleting this. For example, you want to make a 1000 by 1000, 1000 by 500 rectangle. So 1000 by 500 rectangle over here. Let me delete the reference planes. Okay, I do not have any reference plane. I have to make a 500 by 1000 rectangle. So I will do it manually. Okay, like this. This is 1500. I will make it 500. Okay, and this is 1700. I will make it 1000. This is my rectangle. Right, this is okay. Now I have to, let's say I need to make it 00. So how I do that? 0000. I will take it to the origin, right? ये just 1 minute, huh? So are you getting it, Aldrin? Yes, sir. समझ रहा हूँ. This is the example without reference plane. That means I have difficulties in making this with the dimensions. But let's say another example. I am deleting this. Another example with the help of reference planes. For example, before starting my geometry, I have created some reference planes like this. Okay, these are the reference planes, let's say, for example, and by default I have taken the dimension as per my rectangle. Right, जो rectangle मुझे बनाना है, I have taken the reference planes dimensions as per that only. Now I will directly go to create and then go to extrusion, the shape which I want to develop, and then I will directly take this rectangle and I will go to the corners of this reference planes like this and I'll press it. Okay. So this will be ready. So you did see that with the help of these reference planes, I just click over there and then start automatically. It just by default took the geometry, right? Again, for example, let's say I'm deleting again. Let's say I just want to have a kind of small column here in this plane. I'll again go to create and then extrusion and then choose this and then press like this. Okay, you see it is automatically snapping. Are you getting it, Elrin and Anurag? Yes, sir. Automatically snapping it. This is one thing. Again, for example, without these reference planes, you have this kind of, the geometry is not symmetrical about this center line. इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है. Isn't that? But Yes, sir. for example, मैंने यहाँ पर reference plane बनाए and by developing reference planes, I have provided some dimensions as well. Right? I want this side should be equal to this side. I will just enable this equal option. Right? Now this is equal to this side. Left hand side is equal to right hand side. Similarly, for this vertical planes as well, like horizontal planes as well, you see these are 840 or 854 and this is 639. I just want to have these equal sides. I'll press or enable this equal option, right? Fine. Until here, is there any problem, any challenge? No?
No. Now what gonna happen whenever I am going to develop any of the shapes, it will be equal on the both sides from the origin. How? Let me tell you. Now let's say I just want to draw a rectangle. Now it is equal on the both sides. Isn't that equal, 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 equal? Correct? Clear? Correct. Fine. Now this is the view, this is the plan view I have told you, right? When you go to 3D, you will see the shape is developed in a 3D format. Okay. You can check this as well. This is your 3D geometry, like footing plan or like footing. Okay. This is your plan view. This is your left view, how it would look like from left side, right? Just click on that. If you are not able to see the shaded geometry or solid geometry, go to the bottom. Just, just pay attention to my mouse button, this circle, right? Here is the scale view. This is the detail level view. Always work in the fine mode. Okay. It is recommended, and just go to this graphic display visual style. Go to this box and then go to shaded. So when you go to the shaded, you will have this solid geometry. Again, Revit is a specific view. Revit has settings which are specific to the particular view. Okay. That means अगर आपने 3D में shaded कर दिया तो that doesn't mean कि वो हर view में वो आपका shaded दिखेगा. So you need to go to the each and every view and you have to change the view settings. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Aldrin and Anurag, messages are there. Good morning, sir. Okay, sir. Yes, sir. Anurag and Aldrin, are you getting me what I'm saying? Yes, sir. आ रही है. हाँ. Family. This is Revit family window, right? Unlike our Revit project window, we have limited options here. You might have seen at the top. Okay. Okay, man, let me open one Revit project as well so that I can parallelly show you how does it look like, right? What is the difference basically between the, so this is my Revit project window, Revit model window, project window. You see that we have lot many options over here. However, in case of Revit family, we have just limited 5-6 options. Okay, आपका है क्या वो? Right. So this is the difference. Now again, if you go to project, you will find a lot of options over here. North elevation, 3D view, ceiling plans. Okay, project floor plans. And on the left hand side, you have project properties. Whereas if you go to the family, you have limited options over here. Right. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, when we are going to create any shapes, so the role of reference planes, ठीक है ना, reference plane की help से what you can do is your geometry will become very easy. This is the simplest example I have given you, but what if let's say you have to make a critical geometry? Okay, so in that case you have to make different various reference planes, और वो reference planes आपको बहुत help करते हैं आपकी ज्योमेट्री क्रिएट करने में. मोर ओवर, नाउ say for example, I have always given you the examples. I have been using the example of table, parametric table. मैंने आपको बताया था ना, let's say what is parametric design. तो parametric design का मतलब क्या होता है कि आपको you are not supposed to create each and every table from the scratch. Let's say this is a table, this is the top of a table, for example. Okay, so until now it is not parametric, it is simple table. That means it has some dimensions. Let me measure the dimensions. For example, what is the dimension over here? This is 2151. This is 1708. And if you want to increase the size of this text, so go to the scale in the bottom. See in the bottom, 1:20 is the scale right now. Let's say I just want to increase it to the
1:50. Okay, so the text size will increase, right? Now, coming back to the script, this is a table which is a simple table. If you want to make different sizes of table, you have to start from the scratch. For example, you want to have a table of 1500 by 1500, for example. Now, there are two ways. The one way is to again start with a metric generic family and to develop that table. Again, when you will require another type of table which is of 100,000, 1000 by 1000, you will have to start from the scratch. But what if I tell you the simplest way of a parametric model so that you can just adjust the dimensions and you can save that and you can use that. Now, what is parametric family? I have given the dimensions, right? Now go to create, just select this dimension. Okay, you see label dimensions. There is a tab which is enabled on the label dimension. This is very important. Try to focus on that, right? Label. Now, the very first thing you have to create the planes. Okay, and then you have to provide the equal dimension. Okay, and then you need to provide the whole dimension. This is the third step. Fourth step is just select the dimension and go to the create parameter. Go to the create parameter on the top in the label dimension panel. Press this button, create parameter. You have to just give the name of parameter. Let's say I want it as like length of the table. The remaining parameters or the entries will be same. Okay, do not change any of the settings. By default it will be same. You have to just provide the name of the parameter length, so it will become length. You see, this has changed. Are you getting me? You are with me on the same platform, Anurag and Alrin? Hello, are you sleeping or Yes, sir. with me? नहीं 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 सुन सुन. Please don't sleep, otherwise you will lost very beautiful thing, and this is very basic. Now again, this is 1708. Click on this and go to create a new parameter from the top. Make it width. Make this as width. Press OK. This will become a width parameter. Correct? Now, this is a parametric Correct. model. Parametric means if I will change the length of this, it will change. Again, if I'm going to change the width of this, it is going to change. For example, let me show you with the example length. You want it as like 2000 or maybe 1500. You see, it has changed. हम्म. Again, I just want to make it to 1500. Have you observed the change? आपने notice किया? टेबल का Yes, sir. साइज रिड्यूस हो गया एंड छोटा हो गया. equally on the both sides. If you do not press this equal symbol na, so what it will show you that it may increase uh, like unsymmetrical on either of the side. Maybe it will increase like 500 on this side, maybe 700 on the other side if you have not chosen these equal dimensions. Since I have chosen equal dimensions, that is why it is flexing equally on the both sides. Correct? Equally on the both sides. अगर हम्म. मैंने इक्वल वाला सिंबल ऑन नहीं किया होता तो इट माइट हैव रिड्यूस्ड नॉन सिमेट्रिकल साइज. इधर 300 हो जाता, उधर 500 हो जाता, एज पर इट्स विश. ओके, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ये इट वुड हैव चेंज अनसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल. बट व्हेन यू डू दिस इक्वल साइन, दैट मींस इट विल बी फ्लेक्सिंग इक्वली ऑन द बोथ साइड्स. पैरामेट्रिक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप ट्राई करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Star, 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 triple star. I'm giving you this, right? Now we'll be moving to the another part. I'll show you how you can use these five beautiful, forms
to create any of your geometry. Go to create. These are 5 beautiful tools: extrusion, blend, resolve, sweep, swept, blend. Okay, extrusion, blend, revolve, sweep, swept, blend. Correct? Extrusion means, see, when you hover over your mouse on the tool, it will show how you can use it with the help of a video. Extrusion क्या करता है, कोई भी, if you create any 2D shape, it will convert it into a 3D shape, right? You can create any 2D shape, and when you extrude it, it will give you a 3D shape out of that. For example, what I did is I just made this rectangle, and when I saw it into the 3D, it show me the 3D shape. Okay. Now you would say, sir, I need to increase the height and weight. So you can always control with the help of these arrow symbols. Okay. Like this, and with the properties as well. When you click over it, you will find the extrusion, and that means the height. This is by default, it will give you 250 mm thickness. Let's say you want to have 1000, right? Are you getting me? It was 250 by default. By default, it will give you 250 mm thickness. On the left hand side, you see in the properties constraints, right? But let's say you want to increase to 500, you can always change the height, right? Similarly, you can control the, with the help of control points, you can manually also adjust this. Okay. What if you want to change the, let's say you want to say, sir, I do not want to have this kind of geometry. I need to edit this geometry. You can always edit this. Just select this 3D object, go to the edit extrusion. Okay, edit extrusion. It will take you to the draw options. Again, if you want to change this, you can increase this. Okay. If you want to reduce this, you can reduce this. Right? So this is how you can. Now your reference planes will no more be useful, because reference plane को तो आपने माना ही नहीं. Now again, an important thing is that, let's say I'm doing Control Z. Okay. Right. Now there is another option. When you click on this, you will find the lock options. You see this lock, when I click on this control point, this lock has been appeared. Just lock this. That means you have locked your dimension with this reference plane. Now you will not be able to move this in this direction. Again, click on this control point and then lock it with the reference plane. For example, I have locked these dimensions. That means you will not be able to change the size now. Let me show you the example. For example, you want to increase the size this time. So you will find a warning. It will throw an error. Constraints are not satisfied. Okay. So you will not be able to change the size now. You want to change, but it is not allowing you to change the size because you have locked the dimensions. Whereas if you talk about this particular one, because it is not been locked, it can change. It can be changed, right? You can't change horizontally, but you can change vertically because I have not locked the dimensions. But you can again lock these dimensions, right? Press on this and then again you can lock this, right? So you can lock the dimensions again. If you do not want to lock, you can always, unlock them. And if you want to lock, let's say you have a kind of fear that somebody is going to, modify your geometry, or maybe going to, मालिंग your geometry, so you can always lock them. आपको अगर डर है कि भाई आपकी geometry को disturb कर देंगे कोई, so you can always lock the geometries. I hope this is clear until now. Shall I move to the next?
Yes or no? Are क्लियर you है सर आगे। guys? अनुराग, नींद आ रही है? अनुराग, No, sir. No, sir. No, sir. please, pay attention for like another half hour. Yes, sir. I'll leave you then. We'll meet again at 2 p.m. today, है ना? अभी आधा घंटा कर लो. And Okay. then now, सर टुडे पे आज क्लास हो गया सर तो हाँ, क्लास कर लेंगे ना सर नेक्स्ट। नहीं आज ही लेंगे ना, संडे है ना, मंडे मंडे ट्यूसडे में तो ओके it is difficult ना. So since you ओके didn't take yesterday, that is why I'm taking 2 classes today ना. ओके सर। 1 घंटा और just, ज्यादा नहीं, ठीक है? Give me नो that earphones, वो headphone दे दो. Now I'll tell you some of the beautiful another forms. This was the simplest one, extrusion. So extrusion is basically, when you create a 2D geometry, कुछ भी 2D geometry आप बनाइए, and then it will give you the 3D geometry. Just hover over your mouse on the top of that, and you will see how it works. Basically, getting it यस सर। now. Now I am just deleting this. Okay. Now, for example, I need to. This is the simplest example I can give you. For example, uh, okay. Uh, let's say you are working with tunnels, na? Anurag and both of you, Aldrin, you are यस सर। working with tunnel projects, right? So you might have seen in tunnels project there is a kind of transition. Shape change होती है ना जब like आपकी horseshoe shape है and then it will have some transition जब dia change होता है तो it will हॉर्स be हॉर्स से आप कर्व मेंटेन करना है। हाँ. कर्व So में कैसे ने एक्सट्रूड करेंगे सर। So, for example, you have a shape which is rectangular in the beginning or square जब वहां से water enter कर रहा है and then transition होने के बाद it will become a horseshoe shape, let's say, या फिर D shape, for example. Okay, so how can you create that kind of structure? So I am in the left view, just for example, I'm in the left view and I'm going to create and then I'm going to blend. Just hover over your mouse over the blend. You see, you need 2 types of different geometry. Okay, 2 types of geometry, and then you just click that 2 types of geometry. One is rectangular, another one is circular. It will blend your shape. It will join all the points with the help of this. Okay, I'll go to blend. I'll create. I'll create a rectangle first. Right? This is my entry point. This is my first point. And then the second option is I'll go to edit top. This is my base. Now I have to edit top. So I need to provide another shape. Let's say another shape is circular. Okay. Now go to 3D and look for the shape. How does it? Can you see this? Yes or no? यस सर। These kind of transitions are quite common in tunneling, right? You may have instead of horseshoe मैंने इसलिए नहीं बनाया because it will take some time to make a geometry. That is why I have just given you the simplest example. एक टनल है जो कि ट्रांजिशन कर रही है रेक्टेंगुलर फेस से सर्कुलर की तरफ और इट इज अदर वे अराउंड द टेबल एज वेल. कोई टनल है जो कि सर्कुलर है एंड ट्रांजिशन होने के बाद इट इज चेंजिंग टू द rectangular face. So this is kind of blend. Second option I have shown you. This is blend. कोई भी दो different shapes हैं and you want to connect them with one another. So this is the perfect option for them. Blend. You are blending two things basically. Understand? Are you getting यस it? सर। Now third option would be this is blend.
Now we have third option, create revolve. This is revolve. Just pay attention to the hover over your mouse on the plan. Revolve. Okay. एक particular axis आपको बतानी है and it will create a 3D shape around that particular axis. For example, आपको कोई एक राउंड टेबल बनानी है. For example, let us take an example of a round table. The most important thing which you have to take care about the family is the workplace. मतलब किस व्यू में आप काम कर रहे हैं. You have to imagine yourself कि मुझे मेरी टेबल में लेफ्ट से देखूंगा तो how it would look like, or like if I will see it from the top, so वो कैसी लगेगी. ठीक है. तो you have to be pretty much careful about the plan, like views. उस व्यू में जाके आपको वो टेबल बनानी है बेसिकली. सो फॉर एग्जाम्पल एक राउंड टेबल है, हम लेफ्ट से उसको देख रहे हैं तो वो कैसी लगेगी. ठीक है. आई विल गो टू रिवॉल्व एंड देन पे अटेंशन टू दिस यू नो ड्रॉ टूल्स. It is asking me to draw a boundary line. Okay. Boundary line. I have to draw a boundary line. So with the help of these tools, I can draw a boundary. Let's say I am drawing a boundary like this. This will become a boundary. Boundary should be closed. जब भी आप कोई ज्योमेट्री बनाएंगे, you need to consider 2 points. It should be a closed loop always. It should not be an open loop. First condition. Second condition is there should not be two lines intersecting each other. Okay. No two lines should be intersecting each other. Now, this is my boundary line. Now I have to give the axis line. Correct. So about which axis I want to rotate it. Let's say I want to rotate it about this particular axis. Now you have to press this button, which is the finish. Hit this finish button. Okay. It will create a round table for you, just like a round table, basically. Not exactly. See, kind of washer or a round table, whatever you want to call it. Understood? Getting it? नहीं सर, दोबारा बताइए इसको. Okay, I repeat. I'm deleting this. Third shape is your revolve. That means just pay attention to this video. You need a particular axis and you have to create a geometry. Okay. This is your Okay. axis. First of all, कोई आपको राउंड आइटम और शेप बनानी है, उसके लिए यू शुड हैव टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज एक्सिस. किस एक्सिस के अराउंड उसको आप घुमाना चाहते हैं, रिवॉल्व कराना चाहते हैं. एंड दैट सेकंड थिंग इज द ज्योमेट्री, हाफ ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप. फॉर एग्जांपल आपको ये वॉशर बनाना है, जैसे ये वॉशर दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो वॉशर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल गो टू रिवॉल्व. रिवॉल्व के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट अ बाउंड्री. बाउंड्री यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ ऑप्शंस. Okay, how you can create? For example, you have to draw a washer of maybe 800 by 300 thick. Okay, just draw the geometry. Okay, like this. So basically you have created half of the geometry, right? Half of the geometry आपको create करनी है. This is the half. Now second thing वो कहता है कि you have to provide an axis. किस एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट करना चाहते हो. तो दिस इज दी हाफ. मेरे को एक वॉशर बनाना है जो ऐसे रिवॉल्व करे. ठीक है. अगर मैं इसको प्लान से देखूंगा तो ऐसा प्लान मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, बेसिकली लेफ्ट से ही दिखेगा. नाउ द सेकंड ऑप्शन इज गो टू एक्सिस. ठीक है. एक्सिस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी. इस एक्सिस के अराउंड आई वांट इट टू रोटेट. प्रेस ओके. तो इसने मुझे एक वॉशर बना के दी. ठीक है. अब मान लो फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड किया मैंने. कंट्रोल जेड.
इस एक्सिस के अराउंड नहीं घुमाना मेरे को, इसको मुझे ऐसे घुमाना है ऊपर से, ठीक है। तो देखते हैं क्या शेप बनती है। मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सिस ये चेंज कर दी, ठीक है। आप देखो क्या शेप बना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सिस, कौन सी एक्सिस के अराउंड आपको घुमाना है, क्या बनाना चाहते हैं आप, सारा आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। देख रहे हैं क्या इसके लिए इन। विजुअल क्लियर होना पड़ेगा नहीं? एग्जैक्टली जितना विजुअल आपको क्लियर बनाने रहेगा से ना। पहले। बनाना हम्म। क्या है, किस प्लेन में आप देखेंगे तो कैसा लगेगा, उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कैसा लगेगा, टॉप से वो कैसा दिखना चाहिए। हम्म। दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। अगर मैं इसको टॉप एक्सिस से रोटेट कराता हूँ तो कुछ और बन जाएगा, देखो। हम्म। राइट। सो इट ऑल यस। डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। यू कैन क्रिएट एनी शेप्स विद द हेल्प ऑफ दीज 5 ऑप्शंस, आई एम टेलिंग यू। राइट नाउ नेक्स्ट इज स्वीप। स्वीप देखते हैं कैसे काम करता है। For example, you need to give you have to create a shape, okay। और वो शेप आपको एक फॉर एग्जांपल यू नीड टू गिव इट टू इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। आपको किसी जिगजैग वे में या किसी और दूसरे डायरेक्शन में, हाउ आई शुड टेल यू, स्वीप। स्वीप का मतलब है आपको एक पर्टिकुलर शेप है, फॉर एग्जांपल आपकी शेप है रेक्टेंगल, and you want that rectangle to run straight first for 5 meters, and then vertical for 5 meters, and then again into the other direction 5 meters। ऐसा कुछ आपको बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। स्वीप का, आई when you hover over your cursor on the sweep, it will tell you, see here in the video, ठीक है। ये एग्जांपल समझो, हम्म। आपके पास एक शेप है और एक प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल के अलोंग आपको उस पर्टिकुलर शेप को रन कराना है। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे आपको कोई 3D शेप में कोई विंडो का पैनल बनाना है या कुछ और बनाना है, ठीक है। कोई ड्रेन का साइज बनाना है, उस ड्रेन को आपने पाथ दे दिया। उस पाथ देने के बाद आपने उस ड्रेन का शेप ज्योमेट्री बना दिया, इट विल टेक दैट पाथ। मान लो आपका ड्रेन बनाना है आपको, आपकी टनल। अलाइनमेंट चाहिए नहीं, अलाइनमेंट। एग्जैक्टली अलाइनमेंट देना है बस आपको, और वो शेप क्रिएट करना है, इट विल टेक दैट अलाइनमेंट। जहां जहां अलाइनमेंट देंगे वो बना दे। हाउ, लेट मी शो यू। You just go to sweep, sketch path. The first option is you need to sketch the path, okay। sketch path means कैसे आप लेके जाएंगे उसको, right। press the hit finish button, this is your sketch, this is the profile basically। now uh, we need to edit the profile। first thing is to give the path, and second thing is to add the profile, right। now for example I want this kind of profile, let's see, go to the center point and it will give you the profile। just draw your shape and press the finish button। now go to 3D again, this is 3D, okay। now you can see your profile, you will be able to see the profile in 3D, right। and you can see your shape as well, which type of section you want, which type of profile you want। now press the finish button again, 2 times you need to press this। now see the magic, it has created the shape, understood। edit sweep, यस। again I repeat, I will reduce the size of this edit profile,
I delete this. I will make another profile so that it can be clear to you. For example, you want to have a circular pipe of this type of alignment. For example, this is your drain pipe. Okay, 150 dia or 120 dia or maybe 100 dia. And you want to give it a profile. Now see how does it look like. Perfect. 90-degree bend. Right? Understood? अंडरस्टूड. So basically shape आपको देना है and उसको alignment देना है. It will create that particular shape. Last but not the least is swept land. See the video first of all. For example, you have two shapes, two different shapes, and you have an alignment. Okay, and you want to join them, or maybe the shape is not different. Maybe you have rectangle in the beginning and rectangular in the end, but you have a profile for them like alignment, and you want them to, I mean ऐसे ऐसे समझे आप. मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा शेप बनाना है आपको जिसमें रेक्टेंगुलर की ओपनिंग है. इनलेट इनलेट वाटर साइज है आपका 100 by 100 एंड यू वांट, जैसे जैसे द बेस्ट एग्जांपल एल्ड्रिन आई कैन गिव यू, और अनुराग को भी समझ में आएगा. प्रेशर शाफ्ट होता है हमारा, प्रेशर शाफ्ट. सर स्टेयर स्टेयर वॉल्स भी हो सकता है ना सर, साइड वाली जो नीचे से ये ऊपर के लिए ना सर, कौन सा स्टेयर वॉल साइड की ना स्टेयर वॉल में समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी की बात कर रहे हैं. सर. जैसे आपको ऑफिस होते हैं ना आपके, जैसे पार्लियामेंट मान लीजिए, जो नीचे से लोग स्टेयर्स होती है ना सर, साइड में हम्म, वॉल होती है बोथ हाँ. साइड, तो वो भी हो सकता है हमारा. अच्छा, तो मैं आपको एक हाइड्रो पावर का एग्जांपल देता हूँ, एल्ड्रिन समझ जाएगा. एल्ड्रिन जब प्रेशर शाफ्ट आता है, प्रेशर शाफ्ट जब दो बाइफरकेट होता है वो जंक्शन पर, सो हमारा प्रेशर शाफ्ट फॉर एग्जांपल 9.5 डाया है प्रेशर शाफ्ट का. तो जब वो जंक्शन के बाद दो पेन स्टॉक में डिवाइड बाइफरकेट होते, होती है, छोटी होती है. छोटी होती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो दो में होती है. बट उसी को समझो एक पीछे से, पेन लाइक, पेन स्टॉक जो बनता है ना. हाँ पेन स्टॉक जो बनता है, एक पाइप है आपका 100 डाया का. फिर बाद में जैसे घर में आपने देखा होगा हम उसमें रिड्यूसर लगाते हैं. रिड्यूसर लगाने के हम्म. बाद हम उसको 80 डाया का कर देते हैं फॉर सम हाँ. रीजंस. मान लो हमें इतनी जरूरत नहीं है आगे फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट. या फिर आप उसका उल्टा समझे, हमारा जो उल्टा नहीं, ये ऐसे समझे कि हमारा जो मेन वाटर लाइन है, जो हम्म. वाटर सप्लाई से आता है, 100 डाया का हमने कनेक्शन लिया वाटर का. एंड देन जब हम हाँ. अपने घर में आते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे डाया में कन्वर्ट हो जाते हैं. या फिर वही पाइप पहले हमारा 100 से 80 में कन्वर्ट होता है. हम्म. ट्रांजिशन होने के बाद शेप सेम रहती है, ठीक है, बट वो उसका डाया कम हो जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो यू हैव अ प्रोफाइल. ठीक है, उस प्रोफाइल में अब कैसे बनाएंगे, लेट्स सी. स्वेप्ट ब्लेंड, स्केच पाथ, सबसे पहले आपको स्केच करनी है पाथ. ठीक है, गो टू स्केच पाथ, और स्केच पाथ आपकी सर्कुल ऐसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है. ठीक है, ये पाथ बना दी मान लो मैंने टेढ़ी मेढ़ी कुछ. नाउ प्रेस दिस फिनिश बटन. योर अलाइनमेंट इज रेडी. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट प्रोफाइल 1. सी हियर, प्रोफाइल 1, दैट मीन्स ओपनिंग पे आपको क्या प्रोफाइल रखना है. तो मैंने सेलेक्ट किया प्रोफाइल 1. एडिट प्रोफाइल 1, go to edit profile 1. Now it will give you the options, draw options. For example, I want it uh, rectangular. Okay, and then I need to go to this particular plane. Okay, इस plane में जाके मैंने इसको finish कर दिया. First profile is ready. Alignment, first of all, the very first thing is the alignment. Second thing is the first profile. Then it will ask me to select the profile second. I will select profile second and then edit profile. Now it is asking me to provide the profile for this. Right, I'll give circular this side, maybe, for example.
ये मुश्किल बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ज्यादा शार्प बैंड दे दिया, पर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, आई प्रेस ओके एंड देन अगेन ओके। कांट क्रिएट स्वेप्ट ब्लेंड, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा डाया, बहुत ही शार्प टर्म दे दिया तो उसको मिला नहीं पा रहा। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगेन स्टार्टिंग से फिर मैं बताता हूँ थोड़ा सिंपल करके। स्केच पाथ, सबसे पहले पाथ स्केच करना है मेरे को। सिंपल पाथ ले लेते हैं, ठीक है। पहले फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेलेक्ट प्रोफाइल वन, मैंने प्रोफाइल वन सेलेक्ट की एंड देन एडिट प्रोफाइल वन, इसको एडिट किया। तो मैंने यहाँ पर शेप रखी this hexagonal shape. Okay, this is my profile one. I will press finish button. Then I will select profile second. I will edit profile second and then go to provide a profile second shape. For example, ये मेरी circular shape है, ठीक है, no problem. I'll press OK. I'll press again OK. So this is how it will work. See, समझ में आया ये? Yes or no? सर ये यस सर। सर ये जैसे हम बोले फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो। Exactly. या समझ में आ गया। बिल्कुल सही, वहां पर बहुत अच्छा यूज हो सकता है वहां पर ये शेप्स बना के। हाँ सर। आई मीन ओपन यू कैन चैनल फ्लो मेक में। एनी शेप आप थ्री डी में शेप यस कैसी। सर। अभी रिसेंटली वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो उसमें मुझे ट्रांजिशन बनाना था हाइड्रो का ना। तो ऑटो कैड में ट्रांजिशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। मैंने उसको इसमें रैबिट में बनाया और उसके फिर सेक्शंस कट किए। अच्छा, आप इसमें कितने कितने भी सेक्शंस कट कर सकते हैं अब यहाँ पर, नंबर ऑफ सेक्शंस। तो जितने ज्यादा सेक्शंस होंगे साइट पर उतना काम इजी होगा ना, उसको नजदीक नजदीक पॉइंट पर पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। बट जनरली ऑटोकैड में क्या होता है, हम ओनली वन सेक्शन देते हैं। वन सेक्शन मीन्स हम सिर्फ, अगर ये इफ दिस इज 10 मीटर ना, तो हम यहाँ पर एक सेक्शन देंगे, यहाँ पर एक सेक्शन देंगे एंड मिड में एक सेक्शन दे देंगे। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि यहाँ पर कैसी शेप होगी, यहाँ पर कैसी शेप होगी। तो विद द हेल्प ऑफ रैबिट यू कैन कट नंबर ऑफ सेक्शंस। अब आप यहाँ से इसके जितने चाहे सेक्शन कट कर लो, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी करते चले जाओ, जितने मर्जी सेक्शन। जहां और मर्जी। हाँ 10 मिनट में आपकी सेक्शन रेडी, जहां मर्जी सेक्शन। ये सब चीजें ऑटो कैड में पॉसिबल नहीं है। अब गो टू दिस सेक्शन, ये देखो क्या दिखाएगा, सर्कुलर और फ्रंट में। सेक्शन वन। गो टू दिस सेक्शन, ये देखो इसकी एक्चुअल शेप आप सोच भी नहीं सकते ऑटो कैड में कि आप ये बना पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी, यहाँ पर शेप और चेंज हो जाएगी, देखो हो रही है ना। हम्म। सो एक्चुअल ज्योमेट्री का अंदाजा आपको यहाँ से लग जाता है। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फैमिली। आज का जो टॉपिक है ना, फैमिली क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इन सब में जाएं और इनको करें अच्छे से प्रैक्टिस दोपहर तक। वी विल सी यू, आई सी यू अगेन इन द आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून में और कर लेते हैं आगे। आई स्टार्ट विद असाइनमेंट। आई मीन हम एक बिल्डिंग बनाएंगे कंट्रोल ब्लॉक, और मैंने आपको ऑटोकैड ड्राइंग दे दी है, उसको समझो, उसको पढ़ो, ठीक है। उसको डाउनलोड करो एंड देन आई वांट योर रैबिट ओपन बाय द टाइम एट 2:15 टू बजे का लेके चलते हैं, लेट्स टेक 2 PM। उसको रैबिट में खोल सकते हैं, किसको जो ऑटोकैड फाइल दी है खोल उसको। सकते हैं, बट आई विल टेल यू कैसे खुलते हैं ना, वो मैं बताऊंगा आपको। कैसे हाँ, इंसर्ट करना है, कैसे लिंक करना है, कैसे स्केल करना है, राइट। ठीक है। ओके। ओके। अब एक लास्ट टॉपिक आपको बता दूं, मन नहीं मान रहा है, बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट सम ओपनिंग हियर, आपको यहाँ पर ओपनिंग बनाना है, वॉइड बनाना है यहाँ पर। तो होल ये है, चाहिए। हाँ ये वॉइड शेप्स है ना। हम्म। यहाँ पर वॉइड फॉर्म्स में जाओ एंड गो टू वॉइड एक्सट्रूजन। अगेन वही ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे एंड देन सेलेक्ट द ज्योमेट्री, और जिस ज्योमेट्री का होल चाहिए आपको वो ज्योमेट्री यहाँ पर बनाओ, ठीक है। एंड अब क्या होगा, अच्छा जी,
सॉरी, गलत बना नहीं, दिया। ऐसे बैठा ये नहीं। एक, हाँ ये कहीं बैठा नहीं है, कहीं और बनाया, किसी दूसरे प्लेन में बना दिया। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्किंग प्लेन। मतलब किस प्लेन में आप किस रेफरेंस लेवल में काम कर रहे हैं, मैंने बताया ना आपको सबसे पहले। तो हम्म। ये है मेरा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय रेफरेंस लेवल, प्लान में काम कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे को होल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट वॉइड फॉर्म्स, एक्सट्रूजन, चूज अ शेप, सेलेक्ट, राइट। और अब हम इसको 3D में देखते हैं कि क्या बना। ये तो- अच्छा, इसकी हम थिकनेस बढ़ाते हैं पहले, 1000, ठीक है। अभी दिख रहा है ठीक तो रहा है। क्या? हम्म। घुमा के पर देख लो आज दोनों। काम नहीं हुआ सर। वो थिकनेस कम होगी ना, इस वजह से नहीं हुआ, अभी बढ़ा देता हूँ thickness। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा सा कम रह गया, अभी मैं इसको बढ़ा दूँ। थोड़ा सा काम। इसको ऐसे कंट्रोल पॉइंट से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अब दिख गया, अब हो गया, अब राइट। अब हो गया। तो अगर आपको, इफ यू वांट वॉइड्स, वॉइड मतलब समझ गए आप, किसी भी शेप हम्म। का वॉइड बनाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज, दीज आर द, आई मीन extrusion, blend, resolve, these five options are available here also, but these are the void forms, these are the solid forms, okay। सिमिलर है ओके। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सिमिलर वे में यूज होगा ये, बट दिस इज फॉर योर void forms, these are for solid form। और एक चीज और जो काबिल तारीफ है या फिर ध्यान देने की, गौर देने की है, वो ये है कि एक्सट्रूजन एक अलग चीज है, ब्लेंड अलग है, रिवॉल्व अलग है। स्वीप जो है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? स्वेप। स्वेप तो हम अलाइनमेंट के साथ में करेंगे ना स्वेप। हाँ, swept blend is a combination of sweep plus blend, swept blend is a combination of sweep plus blend, ठीक है। ये हम्म। ध्यान देने की बात है, गौर करने की, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करो एंड आई सी यू इन द, ठीक है। इस अगर सर, ये शेप को कैसे कैसे हम डायमेंशन देंगे वो थोड़ा बता दीजिएगा बाद में। कौन सी शेप को डायमेंशन? व्हाइल क्रिएटिंग योर ज्योमेट्री, उसी टाइम पे आपको डायमेंशन देना है ना। देखो, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्सट्रूजन बनाना है ना, तो एक्सट्रूजन जब आपको बनाना है तो यहीं पर आपको डायमेंशन देना है, 1000, जैसे ऑटो कैड में बनाते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक। 1500, राइट, 100, हम्म। ऐसे इस तरीके से आपको देते चलते हैं ना बनाते टाइम। सर्कुलर लेना है तो सर्कुलर डाया पूछेगा वो आपसे, रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल का डाया पूछेगा, कोई भी शेप लेना है तो वो उसी टाइम, व्हेन यू क्रिएट ज्योमेट्री ना, एट दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड योर डायमेंशंस, ऑल राइट। होर्सो शेप कैसे क्रिएट करें? होर्स शेप तो आप ऑटो कैड में कैसे क्रिएट करते हैं, तीन सर्कल लेते हैं, उनको इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद फिर उसको ट्रिम करते हैं, ठीक है, जो भी डाया होता है, आई हम्म। टेल यू, आप देखो उसको, आपको बनाना आना चाहिए, इसमें, अदरवाइज। हाँ नहीं, ऑटोकैड में तो हो जाएगा, इसमें थोड़ा बता ऑटोकैड दीजिएगा। सिंपल काम करता है, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, ऑटोकैड की ही तरह काम करता है। मुझे यहाँ पर अगर होर्शू बनाना है, I'll go to create, I'll go to extrusion, right, एक सर्कल, हम्म। अगेन दूसरा सर्कल, हम्म। ठीक है, फिर तीसरा सर्कल, राइट, फिर मेरा आएगा यहाँ से, यहाँ से फोर्थ सर्कल, ठीक है, ऐसी शेप बनती है कुछ। एंड देन आप इसको ट्रिम कर दो, पहले इसको कट करो सारे सर्कल्स, तो ये एक शेप बन जाएगी ना यहाँ से, हम्म। ऐसे ही होर्शू। जब मैं इस सबको ट्रेन कर दूंगा तो मुझे यहाँ से शेप मिल जाएगी, ऑटोकैड की तरह काम करता है, वही टूल से, ठीक है। ठीक। इनको पहले कट यहाँ से स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट कर दिया, फिर इसको ट्रिम करेंगे, इसको उड़ा दूंगा मैं पहले, ये हम्म। सब बड़े बड़े सर्कल्स उड़ जाएंगे। जब छोटे बनेंगे तो यहाँ से मुझे इनको ट्रिम करना होगा, राइट, आई हम्म। विल ट्रिम ऑल दोज,
cross ओके। sections, and then it will be created for sure. ठीक है. ठीक है। अगर if I'll not have any important work after 2, so I'll take your class. Other, I mean, if I will have any important work, I will let you know in advance. Otherwise, we will have a class at 2 p.m. कहा, दो All बजे right? वाला? हाँ. 2 बजे नहीं हुआ तो रात को होगा? नहीं, रात को नहीं चांसेस, आज होगा तो दिन में, अदरवाइज कम नहीं. से कम 7-8 बजे तो होगा। नहीं नहीं, I'm नहीं सर, outside. नाइट नाइट में रहने दीजिएगा, आज थोड़ा सा फंक्शन है। हाँ हाँ, कल मैंने बोला था ना, मंडे ऑफिस जाना होता है तो